So good morning friends, welcome to PT classes. Today an important session for those who are preparing for PGT Economics lecturer interview. And I hope in this intro we are going to ask lot many new questions. बहुत से नए नए क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और आज जो इंट्रो है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है और इसके साथ साथ हम बहुत से टेक्निकल राउंड की बात आज करने वाले हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स. तो मिस्टर अनिल, आई वेलकम. कैसे हैं आप? सब बिल्कुल. ओके मिस्टर अनिल, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप टीचिंग करियर में क्यों आए? सर मैं टीचिंग करियर में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और एक नोबल. बिल्कुल नोबल प्रोफेशन है, बिल्कुल सही कहा आपने. ओके, अच्छा क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स टीचर आपके हिसाब से? सर एक इकोनॉमिक्स में टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे उसे सब सब्जेक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि मैनेजेबल इकोनॉमिक्स हो गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गई. ओके, और उसके साथ उसको पढ़ाने की बहुत मतलब इच्छा होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ा. अच्छा, पढ़ाने की इच्छा आपको है, पढ़ाने की बहुत अच्छा अच्छे से. Yes. अभी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज है न्यूज़पेपर पढ़ना और साथ में क्रिकेट खेलना और मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ. तो पढ़ना पसंद करते हैं. वेरी गुड. तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं आप? सर मैं इकोनॉमिक्स टाइप पढ़ता हूँ. इकोनॉमिक्स टाइप्स. तो चलिए बहुत से इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए. सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? Sir, the law of diminishing marginal utility is also known as the first law of Coulson. It's propounded by the German economist H.H. Coulson. This law states the fundamental and human obvious needs and behavior that more he has, the less he wants. And this also states that the human needs are unlimited, and the particular type of human needs which are stable and consumers equilibrium established there where the needs are stable of a consumer. You tell me, what is equilibrium price? So equilibrium price is the price at which the quantity demanded of that good is directly proportional to the quantity supplied, and hence there is a positive relationship between the quantity demanded and the quantity supplied. What is oligopoly? So oligopoly is that form of imperfect competition where there are few firms producing homogeneous products and differentiated products, which are close but not perfect substitution of it. Oh. What is Indian Banking Regulation Act 1949? So the Indian Banking Regulation Act 1949 is a legislation that supervises and regulates the banking sector in India. This act as a framework for the banks, including cooperative bank, commercial bank, and other financial institutions. Okay. How do you analyze a country trade balance? So to analyze a country trade balance, you have to first make a difference between export and import. If the country is exporting more, there will be a trade surplus, and if the country is importing more, there will be a trade deficit. What is the role of central bank in economy? So central bank is responsible for regulating money supply, setting interest rates, and maintaining financial stability. It also uses monetary policies to promote economic growth and low inflation. Very good. Monetary policy में कितने members? So monetary policies में 6. Very good. Monetary policy is divided into two parts: contractionary and expansion. आपको मालूम होगा. Contractionary is working for inflation, to control inflation, and expansion is working to control recession. Right? Same as fiscal policy, which is governed by the government of India. Mr. Anil, now my next question to you is, explain the law of supply. So the low supply is the higher the price of the commodity, the higher will be its supply, and vice versa. Hence, it is completely proportional to the price and the quantity supplied. What is the difference between fiscal policy and monetary policy? So, fiscal policies is the use of government spending and taxation to influence the economy, whereas monetary policies is the action of the central government to regulate money supply and interest rates. Okay. Now you tell me, what is marginal productivity theory of distribution? So, in general, it is a price to determine the factor of productions. Margin theory of distribution states the rewards of the factor of productions according to their productivity. Okay. Define national income. So, this is the concept that occupies important space in the economy, and national income is regarded as the flow of goods and services in and nations in the year, and national income is also
can be said as an aggregate income and final value of goods and services produced in a country within a year. Mr. Anil, as you know, there are two types of systems in that is one is PSIV and another is GSIV. So in those banks, give me example of GSIV. कोई example दीजिए. So HSPC. Very good. Mr. Anil, what is law of demand? So the law of demand states that when the price of the good increases, the demand of that good increases. This is because consumers are willing to buy less as of the price of the good increases. And what is opportunity cost? So opportunity cost is refers to the value of the best next alternative that is given out when choices is made. It is the cost of choosing one option over another. What is the term inflation? So inflation is a sustained increase in the general price level of goods and services. Okay. It reduces the purchasing power of consumer and also decreases the value of savings they have. Right. And there are two index for them, CPI and WPI, Consumer Price Index and Wholesale Price Index. Okay, now you tell me the what is the concept of multiplier effect? So multiplier effect is an initial increase in the spending led to multiplier effect on the economic activity. Okay, now you tell me that why should we select you? We have lot many candidates waiting for the same job. I believe that this position for app skills and instrument, but as a fresher, it will not pose any problem but provide a new insight to the greater outlook. As a fresher, I am adaptable and open to new responsibilities and adjust to changing circumstances. Okay, suppose you are not selected in this interview, then what will you do? So if I am not selected in this interview, I will search for better opportunities. Now tell me about your strengths, your strong points. So my strengths are that I am a versatile person, I adjust in any situation around me, and my punctuality is also my greatest strength. And what is your weakness? So my weakness is that I am a perfectionist. I aim to achieve the best out of anything, even if it takes a little bit more time. Okay. Tell me about your family. So I belong to a lovely family of 5 members. My grandfather is the head of the family. My father is a businessman, and my mother is a homemaker, and I am the only child. Okay. What kind of people you like to work with? So even though I'm not judgmental, I like to work with those people who are optimistic in every situation, who are hardworking and punctual. Wonderful. You have given a very good interview. Now it's time for me to give some tips to those who are interested for PGT Economics. Students, if you are going for PGT Economics, the very important thing is that you must know about your introduction. First of all, in introduction, you are not supposed to tell your name, you are not supposed to tell your place, but all other things you can share. They would definitely ask you in your chamber whenever you will go for interview. वो आपसे बिल्कुल पूछेंगे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बस अपना नेम और प्लेस नहीं बताएं, उसके अलावा आप जो भी बताना चाहते हैं आप बताइए. ऐसा इंटरव्यू में होता है अक्सर. जब हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराते हैं रिगार्डिंग सच इंटरव्यूज, तो हमने नोटिस किया रिगार्डिंग एचपीएससी स्पेशली इस तरीके से वो बात करते हैं. आफ्टर दैट दे वुड आस्क यू कॉमन टीचिंग क्वेश्चंस. तो हम लोगों का जो पैटर्न है उसमें यही रहता है कि फर्स्ट डे हम आपको इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन करवाते हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चंस आंसर्स करवाते हैं. सेकंड डे हम आपको सारे प्रोफेशनल क्वेश्चंस करवाते हैं रिगार्डिंग टीचिंग क्वेश्चंस जितने भी होते हैं. इवन हम अपना पीडीएफ वगैरह भी आपको प्रोवाइड करते हैं. थर्ड डे हम आपको देते हैं बॉडी लैंग्वेज विच प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि वहां एक साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत वर्क करेंगे. अब अगर मेरे सामने अनिल है और अनिल ने इंटरव्यू दिया है तो मैं इस समय एज अ साइकोलॉजिस्ट अनिल की बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ. मगर सिंस आज ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं तो माई वर्क इज नॉट टू फाइंड द लूप होल्स, माई वर्क इज टू मोटिवेट हिम सो दैट ही कैन गिव अगेन इंटरव्यू विद बेटर वर्ड्स. इसके साथ साथ हम अपने कोर्स के अंदर आपको डेमो टीचिंग करवाते हैं. डेमो टीचिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर आते हैं, अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप एक चार्ट ले लीजिए, आप बोर्ड के पास खड़े होकर मार्कर लेकर बहुत अच्छे से डेमो टीचिंग सीखते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में. क्योंकि हमारी जो क्लास है वो 1-to-1 सेशन रहता है और उस सेशन के अंदर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. यानी कि जो ऑनलाइन क्लास खास करके होती है वो 1-to-1 होती है. उससे बेनिफिट ये मिलता है. अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो ऑब्वियस है आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे, मगर आपको बेनिफिट जरूर होता है. ये शुरू होता है. फिर हमारी मॉक इंटरव्यूज होते हैं जिस तरीके से मिस्टर अनिल हमें इंटरव्यू दे रहे तो मुझे लगता है इंटरव्यू प्लेस अ वाइटल रोल, वही आपको बेस्ट बना सकते हैं. और उसके बाद हमारा वेल डिजाइन ब्रह्मस्त्र होता है विच विल टीच यू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन इंटरव्यू चैम्बर. वेल आई विल नॉट बी विद यू. ब्रह्मस्त्र इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिंग थिंग फ्रॉम आवर साइड व्हिच वी गिव टू ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट्स. अनिल आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, वेरी प्राउड ऑफ यू. Thank you, sir.